Welcome to our third lecture. In this lecture, we will learn about how to calculate moment of inertia of a general plane, and we will consider hollow circular in this video. Please note, in the last video I had teach you rectangular plane. Hope you had solved and practiced it very well. Now, learning outcome achieved during this session is articulate practical signification of moment of inertia for given section and loading condition. Course outcome mapped is articulate practical application of moment of inertia of symmetrical and unsymmetrical structural section. Then we will see now how to solve a moment of inertia, how to calculate polar moment of inertia, and how to calculate radius of gyration of a hollow rectangular section. Second problem. Calculate polar moment of inertia of a hollow circular section and radius of gyration. See, लास्ट न्यूमेरिकल में हमने जो देखा था उसमें हमने डायग्राम बनाया था. अब इसमें क्या है, डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है. तो हमारी पहली स्टेप क्या थी, रिवाइज इट. गिवन डेटा. क्या है पहली स्टेप, गिवन डेटा. देन कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 176 mm. ये हमको कैसे पता चला, एक्सटर्नल डायमीटर. कैसे, एक्सटर्नल डायमीटर डिनोटेड बाय कैपिटल डी. इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी डिनोटेड बाय स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 132 mm. देन नेक्स्ट स्टेप, टू फाइंड. हमको क्या फाइंड आउट करना है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स IP is equals to question mark and radius of gyration means K is equals to question mark. एक चेंज रेक्टेंगुलर और सर्कुलर में ऐसा है कि रेक्टेंगल में दो एक्सिस होती है, y x. ये लेंथ के वजह से डिफर होती है, पर हॉलो सर्कुलर में एज इट इज इक्वल इन 360 डिग्री, x y axis and x axis both are same. So, solution. Now, polar moment of inertia. उसके लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. I xx is equals to I yy is equals to pi by 64 d raised to power 4 minus स्मॉल डी रेज टू पावर 4. ये स्टेटेड फॉर्मूला है. देन पाई अपॉन 64, कैपिटल डी कितना है 176 रेज टू पावर 4 माइनस 132 रेज टू पावर 4. यूज कैलसी ऑन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की शिफ्ट पाई अपॉन 64 साइड एरो ब्रैकेट 176 raised to power 4 minus 132 raised to power 4 bracket complete is equals to then 32.19 into 10 raised to power 6 mm raised to power 4. Then next we have to find is radius of gyration denoted by K, denoted by K, and formula is I upon A. Here we know I value, but we don't know the value of A. First of all, find A. A is pi by 4 capital D square minus small d square. So, pi by 4 capital D square, that is 176 square minus small d square, is equals to, again, pi by 4 into 176 square minus 132 square, that is 10.64 into 10 raised to power 3. This I value and this A value put in formula of radius of gyration. Then K is equals to under root of 32.19 into 10 raised to power 6 upon 10.64 into 10 raised to power 6.
again under root 32.19 into 10 raised to power 6 upon 10.64 into 10 raised to power 3. We get 55 mm. This is the radius of gyration. Polar moment of inertia. Polar moment of inertia IP is equals to Ixx plus Iyy. अब आप लोग को एक डाउट होगा, सर इसमें Ixx Iyy तो सेम है, तो क्या यहाँ पर एक ही बार लेना है हमको Ixx एंड Iyy? तो द आंसर विल बी नो, है ना. Ixx Iyy सेम है, फिर भी हमको उसको दो बार ऐड करना होगा. 32.19 into 10 raised to power 6 plus 32.19 into 10 raised to power 6 is equals to, again 32.19 into 10 raised to power 6 plus 32.19 into 10 raised to power 6, that is 64.38 into 10 raised to power 6. 64.38 into 10 raised to power 6 mm raised to power 4. अगर हम यूनिट नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा, 50% मार्क कट जाएंगे. सो माय डियर फ्रेंड, वी हैड लर्न हाउ टू कैलकुलेट द moment of inertia about x-axis and y-axis on rectangular plane and circular plane. Hope try to solve the assignment and rigorously submit it on time, because time is money. Please note it. Thank you and have a nice day.